Hello friends, today we will do chapter 7 of class plus 2 integrals. Integrals, introduction point of view. See, when we shall determine the function whose derivatives are given. When derivatives are given, we will find the function. This process is known as integration. इसी process को integration बोलते हैं, and integration is also इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स बिल्कुल इसके अपोजिट है, उल्टा है, और दीज आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स ऑल्सो. इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. इट इम्प्लाइज व्हेन वी विल फाइंड इट्स इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x is equal to sin x. Derivative of sin x is equal to cos x. Integration of cos x is equal to sin x plus c, where c is called the constant of derivatives. Okay, constant of it's called the constant of integration. Sorry, it is called the constant of integration. Okay, for example, अगर हम we are going to find the sin of x plus c derivative of this function, we are going to find c d of dx of first function plus d of dx of this constant. तो derivative of constant, this is equal to sin derivative is equal to cos of x plus derivative of constant is 0, तो which is equal to cos x. तो हमारे पास cos x ही आएगा. Okay, is that clear? We will write some result, then we will do exercise 7a. Now here I have written few result. See, in integration of x raised to power n into dx, how we can find x raised to power n plus 1 upon n plus 1 मीन्स डिफ्रेंशिएशन में हम इसके ऑपोजिट करते थे. हम यहाँ पे -1 करके मल्टीप्लाई करते थे n-1, n को आगे लिख के n मल्टीप्लाइड बाई x रेज़्ड टू पावर n-1. वेयर एज इन इंटेग्रल एज इट इज ऑपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो हम क्या करते हैं n+1 डिवाइडेड बाई n+1, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ x होता था 1/x, तो इसके ऑपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power x into dx is equal to a raised to power x upon log a. Sorry, I have written here log x. Here is log a such that a is greater than 0. Why a is greater than 0? Because a is in the denominator. So how we can it's a is not equal to 0. 0 होगा तो इसकी वैल्यू जो है not is equal to 1. इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाएगी. ओके, देन फोर्थ रिजल्ट इज साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स. आपके पास कोस एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स, तो इसके ऑपोजिट अगर हम करें साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है साइन एक्स के, वो क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर. आर स्टैंड फॉर रियल नंबर. सिमिलरली कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सेकेंड एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता था सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसके ऑपोजिट सेकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू द ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2. ये ध्यान रखना है. सिमिलरली कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ π/2. There is another result, integration of secant x tan x into dx is equal to secant x plus c, where x is not equal to odd multiple of π/2. I have not written it completely. Now ninth result, integration of cosecant x cot x into dx is equal to minus cosecant x plus c, where c is the constant of integration. There are some more results. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता था 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब
इसके ऑपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. अगेन आई हैव रिटन ऑल द रिजल्ट्स हियर. So there are 15 results which I have written here. Now we will do worksheet A, then you can better understand how you can apply these results. The question is that find the antiderivatives or integrals of the following by method of inspection. We know that हमें क्या पता है, derivative of d of x cos of 2x is equal to derivative of cos x is equal to minus sin of x, again derivative of 2x which is equal to 2. Derivative of 2x is equal to 2. Okay, so you can say that it is equal to minus 2 sin of 2x. It implies sin of 2x is equal to minus 1/2 derivative of cos of 2x. Now here is minus 1/2 is just a constant, so you can write it as minus 1/2 cos of 2x. Therefore antiderivative of sin of 2x is equal to minus 1/2 cos of 2x. Hence you can write here, hence antiderivative of sin of 2x is equal to minus 1/2 cos of 2x. Is it clear? Now hence antiderivative of sin of 2x is equal to minus 1/2 cos of 2x. Now we will do some more questions. Now we will find we will integrate 1 minus sin x upon cos square x into dx. Now I'm just going to subtract 1 upon cos square x minus sin of x upon cos square x into dx. Here is also dx. Okay, this is a property of integration which I have used here. Now you can write it as secant square x. 1 upon cos square x is equal to secant square x into dx minus sin of x upon cos x. Cos x square can be written like this, sin upon cos x multiplied by 1 upon cos x into dx. Okay, this is secant square x into dx minus tan x, this is tan x and this is secant x. इन दोनों के लिए आपके पास रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, दैट इज secant integral secant square x is equal to tan of x minus integration of tan x or secant x, or we can say secant x multiplied by tan x is equal to secant x plus c. This completes the second question. Now question number 3, integrate this function. Now I have separated the function sin cube x upon sin square x cos of x plus cos cube x upon sin square x cos square x into dx. Now see, this is sin square x, this is sin cube x. So we can cancel out here sin square x. We will get only sin of x in the denominator, so in numerator, and cos square x in the denominator, plus square x is here, here is cube. We are left with only 3 minus 2, 1, means 1 cos of x is here and sin square x into dx. Okay, it can also be written like this, sin upon cos of x into 1 upon cos x into dx plus cos of x, cos x upon sin x into 1 upon sin x into dx. Now this is equal to tan of x, tan x, then secant x into dx plus this is cot x into cosecant x into dx. This is secant x, integration of secant x into tan x will give you secant x plus
here you have to write negative sign, negative of cosecant x. Integration of cosecant x and multiplied by cotangent x will give you minus cosecant x plus c. C is the arbitrary constant of integration. Secant x, you can write that as minus cosecant x plus c. This completes your third question. Now, question number 4, you have to find out the integration of this expression of dx. See, here I have applied this result, n log of m base e, which is equal to log base e m raised to power n. तो यहाँ पे मैंने वही रिजल्ट अप्लाई किया है, रेस्ट टू पावर 5 कर दिया, e log x रेस्ट टू पावर 5 बेस e. तो इसे मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई किया है, विच इज इक्वल टू x रेस्ट टू पावर 5 माइनस x रेस्ट टू पावर 4 अपॉन x रेस्ट टू पावर 3 माइनस x रेस्ट टू पावर स्क्वायर इंटू dx, which is equal to x4 is common, x minus 1 upon x square is common, x minus 1 into dx, which is equal to, this is cancelled out, which is equal to x raised to power 4 upon x square into dx, which is equal to x square into dx. Now integration of x square into dx, which is equal to x raised to power 3 upon 3 plus c upon 3. This complete question number 4. आज के लिए इतना ही. Tomorrow we will consider some more question from NCERT book. Thank you. Have a nice day.